of science, that is measurement. How far away is your school from your home? How long does it take to reach your school? How much does your school bag weigh? How do you know all these things? आपका स्कूल जो है वो आपके घर से कितनी दूर है, आपको कितना टाइम लगता है वहाँ पहुँचने में, या आपके स्कूल बैग का जो है वो कितना वेट है, तो आप इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जानते हैं? हाउ डू यू नो ऑल दीज थिंग्स? ओके, बाय द एंड ऑफ द लेसन वी विल एबल टू एक्सप्लेन व्हाई वी मेजर थिंग्स, डिस्क्राइब द डिफरेंट थिंग्स वी मेजर एंड नेम द स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट. The need for measurement. Okay, like we use the words like taller and shorter to compare the weight. Okay, to compare the height, and words like heavier and lighter to compare the weight of something, people and animals on a daily basis. Okay, so you measure many things in your daily life. You know how much sugar to add to your milk, what time it is, and so on. ठीक है, हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को मेजर करते हैं. How much sugar is added to our cup of milk, or what time it is, or what is the volume of milk. Okay, what is the weight of your school bag, what is the length of the classroom. तो हम सब चीज़ों को क्या करते हैं? मेजर करते हैं. आप किस लिए करते हैं? और we measure things to find out the size or amount. हम चीज़ों को किस लिए मेजर करते हैं? To find out the size or amount of something. किसी चीज़ का जो है साइज या अमाउंट फाइंड करने के लिए. तो what is measurement? Measuring something is known as measurement. किसी चीज़ को मेजर करना उसको क्या बोलते हैं? मेजरमेंट. Measuring something is known as measurement. Okay. Many years ago, people did not measure things exactly. Okay, in previous times, people क्या करते थे? People use their body parts to measure the things. They use their hand or foot to measure length. Okay, वो अपने हैंड या फुट का यूज करते थे मेजर करने के लिए किसी चीज की लेंथ. जैसे कि ये जो है हैंड का, इसको क्या बोलते थे? हैंड स्पैन. ओके, इसको क्या बोलते थे? हैंड स्पैन. और ये जो है इसको क्या बोलते थे? क्यूबिट. फ्रॉम एल्बो टू द एंड ऑफ द फिंगर, इसको क्या बोलते थे? क्यूबिट. और जो यहाँ दोनों साइड से अगर ऐसे वो लोग मेजर करते थे, फ्रॉम वन एंड ऑफ द हैंड टू अदर एंड ऑफ द हैंड, इसको क्या बोलते थे? फैथम. लेकिन these measures are not so reliable. और टाइम के लिए वो क्या यूज करते थे? टाइम के लिए वो सन का यूज करते थे. But they looked at the sun to guess the time. But the length of the foot or hand changes from one person to another. If the sky is cloudy, we cannot see the sun. ठीक है, लेकिन जो है एक इंसान की लेंथ जो है वो दूसरे इंसान की लेंथ से तो अलग होगी. ठीक है ना, क्योंकि they are not always the same. तो ये these are not the reliable. और how can we see the sun if the sky is cloudy? तो how can we guess the time? तो हम टाइम को भी नहीं गैस कर सकते थे अगर जो है स्काई जो है वो क्लाउडी है. ठीक है ना, तो उसके लिए फिर क्या होगा? To avoid confusion, we now use standard units and instruments for measurement. तो वो confusion को दूर करने के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं? standard units यूज करते हैं किसी भी चीज का measurement करने के लिए. A standard unit is a unit which is always the same. तो standard unit क्या होता है? A standard unit is a unit which is always the same. It does not change when measured by different people or at different times. ठीक है, ये जो है कभी भी चेंज नहीं होता, भले इसको कोई भी लोग यूज करें और किसी भी टाइम में यूज करें. ओके, इट डज नॉट चेंज बाय यूजिंग बाय डिफरेंट पीपल्स और बाय एट डिफरेंट टाइम्स. लेंथ टेल्स यू हाउ लॉन्ग एन ऑब्जेक्ट इज. इससे पहले हम लोग एक वीडियो देख लेते हैं. Do we measure the things around us? How would you measure your height and weight? Why are the words meters and kilograms written after the measurements of height and weight, respectively? Let's try to measure things today. Measurement is a part of everyday life. We measure things in terms of dimensions like length, breadth, height, weight, and volume. Length is the measurement of an object from one end to the other. Let's watch a video to understand what is length. If you have to measure your height, how will you find it? Would you use a scale?
a meter rod or a measuring tape for measuring your height? Here, measuring tape is a suitable means to measure height. On the other hand, if you have to measure the length of a cloth piece, you have to make use of the meter rod. So, in order to measure a length, choose an appropriate device for measurement. Next step is to find the length correctly. Let's take this box and find out its length with the help of a scale. Place the scale straight in contact with the box along its length. If the marking on the scale is not visible or it is broken, so in this case, we can take the measurement from any other visible mark. After taking the measurement, we must subtract the reading of the initial mark from the reading observed at the end mark. For example, here the reading of initial end of the scale is 2 centimeters and the reading observed for the last end is 14 centimeters. Therefore, correct length of the box is 14 minus 2 equals to 12 centimeters. While finding the measurement, I should exactly be in front of the mark of the point from where the measurement is to be taken, and it should also be parallel to the surface. For example, here B is the correct position of I for taking the correct measurement. Reading from position A and C are not correct. So, right placement of scale and position of I are important requisites for correct measurement of length. Do you know the function of a ruler in your geometry box? Yes. It is used to measure things, and today, let's do an activity to measure the length of a line segment using a ruler. We use rulers to measure line segments. The edge of a ruler represents a segment. The edge is marked in centimeters. Each centimeter is divided into 10 parts. Another important measurement, which we all are familiar with, is weight. Let's watch this video. In our day-to-day life, we use several methods for measuring different physical quantities. Kilogram is the standard unit of measuring mass. Kilogram, gram, and milligram are the standard units for measuring weights. Kilogram can be written as kg, and gram can be written as g, and milligram can be written as mg. To measure very heavy objects, we use kilogram, kg. To measure the lighter objects, we use g. 1 kg is equal to 1000 gram. Half kg is equal to 500 gram. 1/4 kg is equal to 250 gram. Now it's time to check your knowledge. Answer the following questions. Which of the following units will you use to measure the length of your pencil box? Centimeter, meter, or kilometer? Weight of an object can be measured using different measuring devices like weighing scale, beam balance, and electronic balance. Do you know you can also measure your height? Height can be measured in centimeters. All you have to do is to find a flat, open space on the floor next to a wall. Stand at a place
where you can stand with your back against the wall. Ask somebody to mark the position above the top of your head on the wall with a pencil. Now measure the distance between the floor and the pencil mark, a measuring tape. This is your height. Name a few things that you buy by measuring their weight, height. Sometimes we use a measuring tape to measure long objects. Have you ever noticed the units written or mentioned on the tape? As we know, we measure large distances in meters and kilometers. 100 centimeters equals 1 meter, 1 m. 1000 centimeters equals 1 kilometer, 1 km. We can measure length, breadth and height using these units. Now, we understood that the metric system is used in a lot many things we see and use every day. These are the standard units of measurement followed by everyone. Now it's time to do something on your own. Recap. Measurement is the measure of the size, length, of an object from one end to the other. A ruler or a measuring tape is used to measure the length of an object. The most common measurements of length are millimeter, centimeter, meter, and kilometer. The length of an object is measured using a ruler or a measuring tape. Grams and kilograms are the units used for measuring weight. 1000 centimeters equals 1 kilometer. Now we read about length. Length tells you how long an object is. Length जो है वो हमें क्या बताता है कि किसी ऑब्जेक्ट की जो है वो कितना लंबा है, कितनी लेंथ है. The length of your classroom, your bed and your book are examples. तो लेंथ की क्या एग्जांपल्स हैं? क्लासरूम की लेंथ, आपके बेड की लेंथ या फिर आपकी बुक की लेंथ. ठीक है, जैसे कि ये रूलर है, रूलर और ये मेजरिंग टेप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? रूलर. ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर. ओके, 1 और इसके बीच 1 और 2 के बीच में जो है पूरा वो क्या होता है? सेंटीमीटर. ऐसे ही जो है ये आपका शॉर्ट स्केल है, शॉर्ट रूलर है, इसमें भी 1 सेंटीमीटर. ठीक है, ये हमेशा सेम रहता है. फिर ये आपका जो है measuring tape. Okay, we use this measuring tape to measure the length of clothes in inches. Like from 1 to 2, it is 1 inch. Okay, we measure length using rulers or measuring tapes. ये हमने आपको बता दिया. This is ruler. These are measuring tapes. Okay, the standard unit of length is the meter. जो standard unit है length का वो क्या है? meter. We measure smaller lengths in centimeters and longer lengths in kilometers. जो smaller lengths होती हैं हम उसको किस में measure करते हैं? सेंटीमीटर्स में. ठीक है, जैसे हमने ये देखा था कि smaller length जो है उसको हम किस में measure करेंगे? सेंटीमीटर में. ओके, और जो longer lengths होती हैं उसको हम किस में measure करते हैं? किलोमीटर में. जैसे कि ये. ओके, जो longer lengths होती हैं हम उसको किस में measure करते हैं? किलोमीटर में. ठीक है, तो 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. मीन 1000 मीटर्स में 1 किलोमीटर. ठीक है, अगर हमें किसी चीज का करना है तो हम उसको लेंथ मेजर करनी है तो क्या यूज करते हैं? रूलर्स या फिर मेजरिंग टेप्स. नाउ वेट टेल्स यू हाउ हेवी और लाइटर एन ऑब्जेक्ट इज. वेट हमें क्या बताता है कि किसी जो है ऑब्जेक्ट का कितना वेट है, मतलब वो कितना हैवी है या फिर कितना लाइट है. The weight of a bottle of water is an example. इसकी एग्जाम्पल क्या है? वाटर बॉटल की उसका कितना वेट है वो क्या हो गया? उसकी एग्जाम्पल. We measure weight with physical balances and electronic balances. ठीक है, जैसे ये क्या है? फिजिकल बैलेंस है. ओके, हम इसके एक तरफ वेट रखते हैं लाइक 500 ग्राम या 1 किलोग्राम और फिर इधर ऊपर क्या रखते हैं? हमारी थिंग्स, whether it is fruits, vegetables or anything else. तो ये क्या हो गया आपका? फिजिकल बैलेंस. और एंड इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस. इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस कैसे? जैसे कि आजकल आप शॉपकीपर के पास जाते हैं तो उनके पास क्या होता है
इलेक्ट्रॉनिक जो है वो गैजेट होता है मेजर करने के लिए वेट का, ठीक है। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज द किलोग्राम, और वेट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम, ठीक है। जो स्मॉलर वेट्स होते हैं उनको ग्राम्स में मेजर करते हैं, और जो हेवियर वेट्स होते हैं उनको किलोग्राम्स में मेजर करते हैं, ओके। ऑल द सॉलिड्स आर ऑलवेज मेजर्ड इन ग्राम्स एंड किलोग्राम्स, like we measure fruits, vegetables and grocery items in grams and kilograms. So 1000 grams makes 1 kilogram, okay. Now volume. Volume is the quantity or amount of substance that a vessel can hold. Volume क्या होता है कि किसी substance की जो है amount या quantity जो कि एक vessel hold कर सकता है, कि उसके अंदर कितना जो है वो आपका आ सकता है, okay. Now these are called the measuring jars, okay. These are called the measuring jars. Like it indicates 100 ml, now 200 ml, 300 ml, okay. This is called the measuring jar. There is another measuring jars, okay. We can measure volume with these measuring jars. The standard unit of volume is the liter. So what is the standard unit of volume? The standard unit of volume is the liter. We measure smaller volumes in milliliters. और जो smaller volumes होते हैं उनको किस में measure करते हैं? Milliliters में, okay. Now we come to time. At what time does school begin? आपका स्कूल कितने बजे स्टार्ट होता है? What does your teacher say if you are late? Okay, if you are late, what does your teacher say? अगर आप late होते हो तो टीचर क्या बोलती है? So for that you have to know the time so that you are in school at the correct time. We tell time using a clock or a watch. हम time कैसे बताते हैं? By using the clock or a watch. The standard unit of time is the second. So what is the standard unit of time? The standard unit of time is the second. We also measure time in minutes and hours, ठीक है। जो हमारा टाइम है उसको मिनट्स और आवर्स में भी मेजर करते हैं। Like 60 seconds में 1 minute and 60 minutes में 1 hour. Now we come to temperature, ठीक है। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर tells us how cold or hot an object is. टेम्परेचर जो है वो हमें बताता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, कोई जो थिंग है वो कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। तो टच योर फोरहेड विद द बैक ऑफ योर हैंड, इज इट वार्म? नाउ टच एन आइस क्यूब, इज इट कोल्ड? तो टच योर फोरहेड विद द बैक ऑफ योर हैंड, अपने हैंड की जो बैक साइड है उससे आप अपना फोरहेड टच करके देखिए कि आपको गर्म लगता है, इज इट हॉट, क्या वो गर्म है? अभी आप दोबारा एक आइस क्यूब को टच कीजिए तो क्या वो ठंडी है? टेम्परेचर टेल्स अस हाउ हॉट और कोल्ड एन थिंग इज। हॉट थिंग इज हायर टेम्परेचर देन अ कोल्ड वन। जो हॉट थिंग्स होती हैं उनका टेम्परेचर जो है ऑलवेज हाई होता है, ठीक है। जैसे हमारा हॉट मिल्क है, हॉट टी है, ओके, हॉट कॉफी है, उनका टेम्परेचर क्या होगा? ऑलवेज हायर। वी मेजर टेम्परेचर विद अ थर्मोमीटर, और हम टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? थर्मोमीटर से। डिजिटल थर्मोमीटर्स आर आल्सो अवेलेबल नाउ टू मेजर टेम्परेचर। पहले जो है ऐसे आते थे, इसके अंदर मर्करी लगा होता है, अगर हमें बुखार है तो मर्करी लेवल जो है वो राइज हो जाएगा, ओके। अभी क्या आने लग गए? डिजिटल थर्मोमीटर्स, ठीक है। उसके ऊपर डिजिट्स आ जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? डिजिटल थर्मोमीटर। वी मेजर टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, ठीक है। हम टेम्परेचर को कैसे मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस या फिर फ़ारेनहाइट, ओके। तो I hope you all understood the chapter with this video. Now, do you know the normal body temperature of humans is around 37 degree Celsius? Okay. What is our normal body temperature? Our normal body temperature is around 37 degree Celsius. The temperature increases when we have a fever. Okay. जैसे हमने पहले पढ़ा कि कोई भी चीज जो है वो हॉट है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? हाई होगा। ऐसे ही अगर हमारी बॉडी गर्म होती है तो हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई होता है, मीन्स वी हैव अ फीवर। Now you know measurement is finding out the size or amount of something. Measurement क्या होता है? किसी चीज का जो है अमाउंट या उसका साइज फाइंड करना, ओके। So measurement is finding out the size or amount of something. What is length? Length is the distance from one end of an object to the other end. The standard unit of length is the meter. Length क्या है? Distance from one end of the object to the other end, and standard unit of length is the meter. Weight is the measure of how heavy or light an object is. Weight क्या होता है? Weight होता है कि weight is the measure of how heavy or light an object is. किसी चीज का जो weight है वो मतलब कितना हाई है या कितना लो है, मतलब कितना heavy है उसका weight या कितना light है, वो क्या होता है? Weight.
द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वेट इज द किलोग्राम, और वेट का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम। वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट अ वेसल कैन होल्ड। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी वेसल के अंदर जो है किसी चीज का कितना अमाउंट आ सकता है, मतलब किसी सब्सटेंस का जो अमाउंट या क्वांटिटी है वो एक वेसल के अंदर कितनी आ सकती है, हम उसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज द लीटर, और इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, लीटर। द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम इज द सेकेंड, और टाइम का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, सेकेंड। टेम्परेचर इज अ मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज। टेम्परेचर क्या होता है, किसी चीज का मेजर, कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट इज, और हाउ इट इज मेजर्ड, टेम्परेचर इज मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। ओके, with this our chapter is over. Okay, so thank you.